अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, ये हमने ब्रीफली इंट्रोडक्शन मैंने कल दिया था और इसका स्टार्ट कर लेते हैं। आई हैव अपलोडेड वर्कशीट ऑन द गूगल क्लासरूम, मटेरियल वगैरह सारा वहाँ पे अवेलेबल है। डू लुक इनटू दोज वर्कशीट, स्टार्ट सॉल्व देम। ठीक है, वी आर डन विद चैप्टर 1, तो मेक श्योर कि आप लोगों को आइडिया क्लियर हो जाए कि फर्स्ट चैप्टर में व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन। वैसे एमसीक्यूज हम यहाँ पे करें, थ्योरी पे ज्यादा फोकस करें इन दोज वर्कशीट्स। एनीवे, this chapter पहले it used to be separate, लेकिन अभी syllabus में they have combined these two, atomic structure and bonding. So structure of atom पे हमने थोड़ी सी कल बात की थी कि the smallest particle, smallest unit of a matter is mostly empty है। There were physicists who discovered this, कैसे discover किया था वो सारा है, experiments कौन कौन से हुए थे, alpha scattering, what is it about, and so on. We are not going into that much of a background. All we have to know is कि atom has the essential particles. Essential. वैसे number of particles I mentioned yesterday, there are more than 100 particles. ठीक है, essential there are 3 particles: proton, neutron, electron. Proton and neutron lie inside the nucleus, और electron exist at fixed distances, और उस distances की जो location होती है that is called shell. ठीक है, shell is not something physical, it's just the representation of its distance and energy. Particles की अगर हम बात करते हैं, you should know, you should memorize these values कि अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन का आपके पास जो चार्ज होता है, इट्स अ चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन पे चार्ज इज +1। ठीक है, चार्ज के बारे में थोड़ा सा इशू ये, डज नॉट हैव फिजिकल नेचर। मतलब देखिए, मास का तो फिजिकल नेचर होता है, इट हैज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज 500 ग्राम्स, तो चेयर जो है ऑब्वियसली वो 2000 ग्राम्स होगा या 3000 ग्राम्स होगा। चार्ज इज a bit tricky to understand because it does not have any physical existence. चार्ज का कोई मतलब, if you have a charge object and a neutral object, both are exactly same. ठीक है, तो चार्ज को फिर हम फिजिक्स में आगे जाके जरा डिटेल से डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द एविडेंस ऑफ अ चार्ज। लेकिन इट्स जस्ट अ फिजिकल क्वांटिटी जो कि अदर चार्ज पार्टिकल्स के साथ या तो अट्रैक्शन करता है या रिपल्शन करता है। ठीक है, तो चार्ज के 2 काम हैं, या तो अगर सिमिलर चार्जेस है वो रिपेल करता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल करते हैं इफ दे आर सिमिलर, और अगर अपोजिट है तो दे विल अट्रैक्ट वन अनदर। चार्जेस का सिर्फ ये रोल है, टू कॉज आइदर रिपल्शन और अट्रैक्शन। ठीक है, बाकी इसका फिजिकल शेप नहीं होता, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इट जस्ट कॉजेज रिपल्शन और अट्रैक्शन। एनीवे, प्रोटॉन पे +1 चार्ज है, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन? -1। ठीक है, and neutron is 0, it does not have any charge. That is why electrons cannot escape the nucleus. Okay? The reason electrons are always nearby the nucleus, it's because opposite charges attract one another. ठीक है, अगर इन पे charges ना होते, it would have been very difficult to keep the atom together. Anyway, if you talk about masses, proton is, it has a relative charge of +1. इसके साथ हम यूनिट नहीं लिखते, रीजन क्या है? Why don't we write any unit? मैसेज के तो यूनिट्स होते हैं ना, ग्राम, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, नैनोग्राम, किलोग्राम। Why don't we write unit? हम कहते हैं बस प्रोटॉन हैज a mass of 1. It is a physical quantity, mass it is physical quantity, but quantities are always written with a unit. इसके साथ हम unit क्यों नहीं लिखते? What do you think? What is the reason behind it? कि प्रोटॉन के साथ हम unit नहीं लिखते? कोई इनपुट है जी? आपको क्या लगता है जी? Relative है, that is true. Actually it's not its actual mass. ऊपर हमने लिखे हुए relative, which means it is linked to something relative to what is that standard which we'll discuss अभी upcoming topics हम discuss करेंगे. It is related to 1/12 of carbon atom.
ठीक है, which we'll talk later on. But anyway, the point is we don't write unit because it's related to some other standard. ठीक है, and what is that standard? We'll discuss that later on. And why do we have to relate it? Why not we write its actual value? आपको क्या लगता है, इसको हम relate क्यों करते हैं? Actual masses क्यों नहीं लेते? बहुत छोटा होता है, that is the main point. Proton का जो kilograms में mass है, it's very very small. So if I am dealing with such small masses and I keep on writing kilograms, discussion will be very complicated. तो इन्होंने क्या किया, to keep the discussion simple in chemistry, इन्होंने एक standard select किया. We'll talk about that standard later on, and they are all linked to that one standard. कि अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ mass 1 unit, it means it's exactly equal to that standard. If I ever write an atomic mass unit or a unit or mass of maybe 5 units, it means it's 5 times heavier than that standard. ठीक है, so actual values अगर आप देखते हैं, actual values are very very small. ठीक है, anyway, न्यूट्रॉन का फिर relative mass कितना होता है? न्यूट्रॉन का relative mass, charge is 0 but mass is 1, which means के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो heaviness है, that is exactly same. जितना प्रोटॉन हैवी है उतना जो है न्यूट्रॉन हैवी है. इलेक्ट्रॉन इज वेरी लाइट, इट्स 1800 टाइम्स स्मॉलर देन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ठीक है, एक्चुअल वैल्यूज अगर इफ यू जस्ट वांट, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, चार्ज का भी अपना यूनिट होता है. इस तरह मैथ्स का यूनिट किलोग्राम्स है, चार्ज का यूनिट किसको आता है? हाँ, लेकिन यूनिट पॉजिटिव इज द नेचर और यूनिट किसी को आता है? फिजिक्स में कहीं पे पढ़ा तो नहीं है. चार्ज का भी यूनिट होता है, कूलम्स इट इज कॉल्ड. कैपिटल सी से डिनोट होता है. ठीक है, सो एक्चुअल चार्ज इज वेरी स्मॉल एंड एक्चुअल मास इज वेरी स्मॉल. तो इसलिए व्हाट वी डू इज वी डोंट यूज एक्चुअल मास एंड एक्चुअल चार्जेस इन केमिस्ट्री. हम क्या करते हैं, सारी डिस्कशन रिलेटिव के साथ है. इज दिस क्लियर? यस. एक्चुअल चार्ज प्रोटॉन का, and this can all, since electron का भी 1 ही है तो electron का भी यही actual charge, but we don't use these in chemistry. actual charges और actual masses हम नहीं use करते. हमारा सारा periodic table, moles की discussion, everything is all linked to relative. ठीक है, तो हम relative values use करते हैं just to keep the discussion simple. Anyway, I'll move forward. इसमें कोई question है तो बता दें. ठीक है, it's pretty basic. लेकिन देखिए, आई वुड सजेस्ट आप मेमोराइज, ब्लाइंड मेमोराइजेशन शुड नॉट बी द अप्रोच. यू शुड क्वेश्चन एवरीथिंग कि ये क्यों होता है. हाँ, इफ इट्स द आंसर इज बियॉन्ड द स्कोप, आई विल टेल यू, वी विल डिस्कस इन मे बी ए लेवल्स का है या भी है, बट ट्राई टू बी मोर क्रिटिकल. एंड इफ यू टॉक अबाउट प्रोटॉन, इट्स वेरी ऑब्वियस. किसी भी सब्सटेंस का प्रोटॉन नंबर हमें शो करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वेरी क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, एंड इट इज आल्सो नोन एज एटॉमिक नंबर. अगर मैं आपसे कहूं कि पीरियोडिक टेबल में फॉर एग्जांपल कार्बन का प्रोटॉन नंबर क्या है या एटॉमिक नंबर क्या है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, दे आर 6. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटॉन नंबर? व्हाट डू यू थिंक? You can, that is one way to look at it. You can find out the number of electrons. That is one way. और क्या इसकी importance क्या है periodic table में या generally? Why do we need proton number? Why are we not interested in the neutron number? Group them with the order grouping. नहीं, more important point. Anyone else? कितना reactive? नहीं. There can be some trends. They're not always same. Like sodium does not have proton and neutron equal. Their proton is 11 and neutron is 12. Achha, let me just give you a brief idea. Proton number is known as the identity number of a substance. Every element in the periodic table has a unique proton number. Proton number determines what substance it is. अगर मैं कहता हूं कि प्रोटॉन नंबर एक न्यूक्लियस में 7 है, it will have all the properties of nitrogen. No other element in this universe can have a proton number of 7 and be called something else. ये इसका identification number होता है.
आपके केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, अदर डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो ये होता है कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स यू हैव इनसाइड अ न्यूक्लियस. So you can identify an element by its proton number. The next time you see a proton number, it means if you want to identify, if I randomly give you proton number of 16, you just look into the periodic table, that should be of sulfur. Is this clear? The proton number जो होता है, it is the identity. Yes, you're right, जो online है बिल्कुल, it's a unique for atom, that is important. It refers to the identification of an element, and every element has a unique number of protons. ठीक है? Relative atomic masses we'll look into. अच्छा, so no two different elements can have the same proton number. Is this clear? Proton number की अच्छा, nucleon number is protons and neutrons, mass number. अच्छा, वैसे मुझे ये बताएं, what do you think is the role of neutrons? Neutron does not have any charge. Why do they have to exist in the nucleus? So it does not have any charge, so it does not play any role in balancing the charges. Then what do you think is the role of neutron? But since it does not have a charge, it cannot attract electrons. Yeah, you are almost there. It helps in avoiding excess of repulsion. देखिए, just imagine I have an atom of oxygen, 8 protons हैं. Is it possible to keep 8 protons together? They all repel one another. देखिए, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास 8 protons हैं, and all of them repel one another. What will keep them together? ठीक है? We need some other substance which can fuse and keep या dilute the repulsion, ताकि वो उसको साथ fuse करके रख सके. ठीक है? And we can understand its importance from hydrogen. देखिए, हाइड्रोजन का periodic table में it has 1 proton. Will there be any repulsion? एक प्रोटॉन है, ठीक है, there will be no repulsion. So do we need neutrons? We don't need neutrons, right? तो उसका mass number क्या होता है? 1. हाइड्रोजन का मोस्ट कॉमन जो आइसोटोप है does not have any neutrons, क्योंकि जरूरत ही नहीं है. Do you get the point? इसी तरह अगर आप देखें, if you talk about carbon, if you have 6 protons, the remaining mass number is due to neutrons. ठीक है, तो 6 protons हैं, तो almost same number of neutrons चाहिए to keep the nucleus together. But as you proceed, अगर आप आयरन की बात करते हैं, it is 2656, the most common isotope. तो फिर आपके पास, if you have too many protons, then you need more and more neutrons to be stable. ठीक है, तो आपको 26 से ज्यादा न्यूट्रॉन्स चाहिए. You need 30 neutrons to keep the nucleus intact. अगर आप और आगे periodic table में जाएं, if we talk about maybe uranium, 92 protons. ठीक है, इसका जो आपके पास कितने exactly 230 238 भी है, different isotopes, and let's say we talk about 238. Now 92 protons, you need too many neutrons to keep it together. There's so much repulsion that you need many neutrons to keep it together, but still those neutrons are not enough. ये फिर भी neutrons काफी नहीं होते. What happens? यूरेनियम में क्या होता है? यूरेनियम की क्या प्रॉपर्टी है? It is radioactive, which means that even though we have so many neutrons to keep it together, but still neutrons are not that much successful. What happens? It starts to emit particles, जिसकी वजह से you never go near uranium, क्योंकि उससे constantly particles निकल रहे होते हैं. If they collide with the DNA or with the skin or whatever, it will they have they are cancer causing. Abnormal cell division start हो जाती है. So that is why we don't go near uranium. Anyway, coming back to the topic, neutrons का role क्या है? To keep nucleus intact. Is this clear? अच्छा, लेकिन any additional point not needed in syllabus, तो मैं इतना detail. All of these sentences are important, इस पे ज़्यादा focus में, लेकिन
जनरली आपको हर चीज का रोल पता होना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट. Anyway, nucleon number is proton and neutrons together. For example, calcium है तो इसका mass number भी कहा जाता है neon number को, और atomic number भी कहा जाता है. So if you want to identify proton number 26, मैंने कहा proton number की identity number है periodic table में, you will have to look into 26 can only be of iron. ठीक है, not anything else. Proton number 18 भी आपके पास argon का है, and so on. ठीक है. अच्छा, now we talk about a little bit about particles which are neutral and which are positive or negative. Neutral atom में, if you talk about protons, neutral does not mean it does not have any charge. Neutral का मतलब होता है the charges are there but they cancel out each other, they are equal. ठीक है. न्यूट्रल मैं आपसे कहूँ ना, एक सोडियम न्यूट्रल एटम है, डज नॉट मीन कि इसके अंदर चार्जेस नहीं है, इसके अंदर चार्जेस हैं बट बैलेंस्ड है. तो रिमेंबर, कभी भी वो आपको न्यूट्रल पार्टिकल की बात करे तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बैलेंस होंगे. न्यूट्रॉन्स आप हमेशा फाइंड कर सकते हैं मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर. नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स में क्या होता है, if you have a particle which is negative, for example nitrogen with -3, which is known as nitride, what is unique about nitride compared to nitrogen? इसमें क्या हुआ है जी, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं. ठीक है. प्रोटॉन कभी गेन नहीं हो सकता, प्रोटॉन लाइज इनसाइड द न्यूक्लियस. प्रोटॉन अगर गेन हो जाए वो तो पूरा सब्सटेंस ही चेंज हो जाएगा. इफ आई से आई एडेड 3 प्रोटॉन्स टू नाइट्रोजन, फिर तो वो नाइट्रोजन नहीं रहा. यू डू हैव हायर लेवल में न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर रिएक्शंस जिसमें हम प्रोटॉन टारगेट करते हैं, न्यूट्रॉन टारगेट करते हैं, बट एनीवे केमिस्ट्री में प्रोटॉन नंबर नेवर चेंजेस. During a reaction या during the exchange, it's only the electrons that can be lost or gained. आपने प्रोटॉन लॉस प्रोटॉन गेन की बात की, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. यू हैव टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो एनीवे पॉइंट ये है कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर जनरली कॉल्ड आयंस, या स्पेसिफिकली नेगेटिव को हम एनाइंस भी कहते हैं. ठीक है. एनाइंस का मतलब नेगेटिव आयंस. So negative ions में क्या होता है, number of electrons increase, and positive charge particles जिसको हम generally ions कहते हैं, और we also call it cations. तो cations में what we say is the number of they lose electrons. Proton को आपने change नहीं करना, वो उसकी identity है. Is this clear? You have to talk about either loss of electrons or gain of electrons. Anyway, few basic examples, then we'll look into a past paper question. अगर मैं आपसे कहूँ सोडियम का बताएं, प्रोटॉन इज 11, न्यूट्रॉन इज 12, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11. ठीक है. क्लोरीन, प्रोटॉन इज 17 जी, 18, और इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे. यूरेनियम का भी इस तरह, जस्ट इसमें वो आपसे सिर्फ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मांग रहा है. प्रोटॉन, पोटेशियम इज 19. ठीक है. पोटेशियम पीरियोडिक टेबल में देखें, इलेक्ट्रॉन इज 18. ठीक है. मैग्नीशियम इज 12, इलेक्ट्रॉन 10. नाइट्रोजन का प्रोटॉन 7, इलेक्ट्रॉन्स 10. नेगेटिव है तो इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. क्लियर है कि नहीं? If two different particles have the same number of electrons, they are called isoelectrons, but not needed. इसका बताएं. प्रोटॉन 16 है, इलेक्ट्रॉन 18. Is this clear? ये क्लियर है कि नहीं? इस पे आपके MCQs आते हैं. We'll look into few MCQs, but before that we have to talk about electronic configuration. Electronic configuration किसे कहते हैं जी? जुहेब के अलावा जी, लास्ट आपका नाम उमर सईद से हेमल. अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपके ख्याल में किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की
हाँ, लोकेशन या अरेंजमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, जोहेब यू वांटेड टू गिव इनपुट इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस, सिंपल टर्म्स में आप सीक्वेंस कह सकते हैं, राइट? कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन द फर्स्ट शेल, हाउ मेनी एग्जिस्ट इन सेकंड शेल, एटसेट्रा. फर्स्ट शेल हैज 2 electrons. ठीक है, so for example nucleus है, electrons inside an atom exist in fixed energy levels. This was a very important discovery. पहले it was thought कि electrons are randomly moving. ठीक है, but then there were experiments which proved that electrons cannot randomly move. They exist at fixed distances, and those distances are called quantum levels, hence the name quantum physics. Quantum physics सिर्फ इस एक word पे, this was the starting point of quantum physics. Okay, everything on a subatomic level exists in fixed distances या fixed energy values. इसके अंदर first shell has a different energy value, second shell has different. Electrons can either exist at this location or this location. In between, electron cannot exist. And ये जो black line है, this boundary, it only represents the location. Black boundary actually does not exist. ये सिर्फ उसका location show कर रहा है कि यहाँ पे ये हो सकता है. ठीक है? So quantum physics is all about energy levels because they were called quantum levels. तो ये quanta means number, fixed number. तो वहां से इसका quantum physics यहाँ से start होती है. अच्छा. So the first shell, you're right, it has 2 electrons. 2 के पीछे भी वैसे एक reason है. Why not 1 electron or why not 3 electrons? It has to be 2. 2 electrons जो हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ. Electrons, they have negative charge, right? तो अगर 2 electrons हैं, they will repel one another. But how do you keep electrons together? You don't have neutrons to keep it together, right? Protons को तो neutron hold करता है. Electrons don't have neutrons. Electron को एक बॉक्स में रखने का तरीका ये होता है, मैं बॉक्स का वर्ड यूज कर रहा हूँ, but anyway, you keep them in pairs. And what they do is they start to, क्योंकि electron is always spinning, they start to spin in the opposite direction. So ये फिर एक साथ रह जाते हैं. तो electron का एक nature है, which we'll discuss in throughout O levels, AS, A2, higher level of chemistry. Electron, they are more stable if they are in pair, क्योंकि एक दूसरे को cancel out कर सकते हैं by rotating in the opposite direction. फिर हम वो डिटेल पढ़ते हैं कि they create a magnetic field. So whenever they are in pairs, they attract one another. They create a magnetic field. एक का north pole बन जाता है, एक का south pole. They exist together. तो वैसे एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर इफ दे एग्जिस्ट इन पेयर्स. तो इसलिए फर्स्ट शेल में भी एक नहीं होता, 3 नहीं होते, ये हमेशा पेयर्स में होते. ठीक है, बट एनीवे, फर्स्ट शेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड शेल हैज 8. ठीक है, तो प्रेफरेबल ये है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन शेल्स में शो करें, आप पेयर के फॉर्म में शो करें. इट जस्ट शोज दैट यू नो अ लिटिल बिट मोर केमिस्ट्री. अगर आप इस तरह अलग अलग शो करेंगे, ठीक है, दे डोंट हैव एनी मार्क फॉर इट, बट इट्स प्रेफर्ड, केमिस्ट प्रेफर आप इलेक्ट्रॉन्स जब भी शो करें, if you have to show number of electrons, try to show them in pairs because that is how they exist. जी. हाँ, so you have to, yeah, you're right, the first shell is known as duplet because it has 2 electrons. First को भी अगर आप pair में show करते हैं, it's a good practice. It does not carry any mark, लेकिन generally it's a good practice कि आप इसको pairs में show करें. ठीक है? Second shell, which is octet, octa refers to 8. They have given a name to it. तो इसमें हम 8 electrons show करते हैं. Third shell में in reality there are 18 electrons, लेकिन O levels में they want to keep it simple, they'll call it 8 electrons. मैं यहाँ पे mention कर रहा हूँ reality is 18, but to keep things simple they'll take it as 8 electrons. ठीक है, and they'll not confuse you. ये नहीं होगा कि they'll ask a question and some of you write 8 or the other write 18 and they'll cut marks. 8 ही assume करें. ठीक है. So anyway, third shell को भी मैं
8 कह रहा हूँ. Last shell has its own name called valence shell. जो लास्ट शेल होता है उसको अपना नाम दिया जाता है because it has importance compared to inner shell. Why is the last shell important? It loses electrons during a reaction. Reaction में ये internal electrons are never involved. It is the outermost electrons which are involved. तो इसलिए इसको इन्होंने अपना एक नाम दिया and that name is called valence shell. ठीक है, so the last shell is known as valence shell and number of electrons in the last shell is known as, the electrons are called valence electrons but the number of electrons, let's say if you have 3 electrons तो हम उसको कहते हैं valency. ठीक है, the electrons of last shell are known as, or this is R, valence electron, the number of electron is known as valency. Valency का मतलब ये है कि last shell में कितने electrons हैं. If I ask what is the valency of sodium, you have to answer 1 क्योंकि उसकी shell में एक electron है. If I ask valency of nitrogen, you have to answer it's 5 because उसके आखिरी shell में 5 electrons होते हैं. जी हाँ, थर्ड में फिलहाल आप 8 ही एज्यूम करें. थोड़ा सा हम हायर क्लासेस में जब जाते हैं बिकॉज टू मच इंफॉर्मेशन देन वी विल डिस्कस इन ओनली इन द सेकंड चैप्टर. तो टू कीप थिंग्स सिंपल आप थर्ड में 8 एज्यूम करें. रियलिटी इज डिफरेंट. ठीक है, क्योंकि स्टार्ट बेसिक क्लियर हो जाए देन ए लेवल्स में यू विल बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉन इन डिटेल. फिर ए लेवल्स इज नॉट लाइक दिस. 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिर हम 8 इस तरह नहीं कहते. शेल के अंदर फिर सब शेल्स होते हैं. 8 इलेक्ट्रॉन्स में 2 एक जगह होते हैं, 6 दूसरी जगह पे होते हैं. जहां पे 2 होते हैं उसको हम S कहते हैं, जहां पे 6 होते हैं उसको हम P कहते हैं. तो स्टेप वाइज डिटेल इज एडेड. ए लेवल्स में भी आपका सेकंड चैप्टर यही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, बट इट हैज अ लॉट मोर डिटेल इन इट. ठीक है, तभी आप 8 electrons ही try to just keep 8 electrons in mind. Any other question you have? Should I move forward? आगे जाएं. उमर सईद. अच्छा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिस्कस कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम, हाउ डू वी राइट? 281. फर्स्ट शेल हैज 2 electrons, सेकंड शेल हैज 8, टोटल 11 है, तो लास्ट शेल में 1 आ जाएगा. ठीक है, तो sodium has a total of 3 shells and it has a valency of 1. What about chlorine? How do we write? 287. Pretty basic. इसके पास भी 3 shells हैं, valency 7. Chlorine का क्या है? 27. Total 9 है ना. The first shell will have 2 electrons, the second shell will have 7. So total इसके पास 2 shells हैं, valency 7 है. Potassium is 2881. ठीक है, टोटल 19. टोटल शेल्स 4 हैं और वैलेंसी 1. ठीक है. अच्छा, पीरियोडिक टेबल के बारे में, इन शेल्स और पीरियोडिक टेबल का क्या लिंक है? व्हाट इज द लिंक बिटवीन शेल्स एंड पीरियोडिक टेबल? या वेयर डू वी सी द रिफ्लेक्शन ऑफ शेल्स इन पीरियोडिक टेबल? पीरियड नंबर. द हॉरिजॉन्टल रोज are determined by the number of shells. देखिए, इसके पास क्लोरीन has 3 shells, sodium has 3 shells. So row wise we should find sodium and chlorine in the same row. So which means third row. Exactly, sodium से लेकर argon तक they all have 3 shells. इसी तरह फ्लोरीन उस वक्त आ रहा था 27, 2 shells आ रहे. So it's not just fluorine. If I talk about maybe boron which has proton number 5, तो electrons भी 5 हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी? 2 3. So कितने shells आ रहे हैं? There are 2 shells. So all of them have 2 shells. लिथियम से लेकर नियॉन तक सबके पास 2 shells. And we do have elements which have only 1 shell, but there are only 2 of them.
हीलियम एंड हाइड्रोजन एग्जैक्टली। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स, तो इट हैज वन शेल। सो पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 ये हमें यही शो कर। एक्टोनाइड्स एंड लेंथेनॉइड्स इसको इग्नोर करें, ठीक है। व्हाट अबाउट वर्टिकल? वर्टिकल कुछ ग्रुप, हाँ ग्रुप नंबर तो ये क्या शो करता है? वैलेंसी, सिंपल वैलेंसी शो करता है। सोडियम का भी आ रहा था 281, पोटेशियम का आ रहा था 2881, both were having a valency of 1, so that is why all of them are in the same group। इन सब के पास एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। So vertically they are called groups, they have same valency। So what is unique about atoms in the same period? Do they have any similarity? मतलब शेल सेम है, एनीथिंग एल्स? फिजिकली कोई सिमिलैरिटी होती है या द वे दे बिहेव? पीरियड 1 के मतलब ये वाले जो एलिमेंट्स, हाँ। सो यू मीन टू से ग्रुप्स हैव सिमिलैरिटी, period number do not have, they don't have any similarity, they are very different। Sodium is very different from chlorine in every regard। Sodium is a metal, it conducts electricity, exists in solid form, it's highly reactive। Chlorine exists as diatomic, it's a gas, it has a pale yellow color, it's toxic, ठीक है, it's a non-metal, does not conduct electricity, etc। Which means के if you are interested in similarity, horizontal rows do not have any similarity, but if you talk about groups, they are very similar। Lithium and sodium, they all react with exact similar substances। If lithium can react with oxygen, sodium, potassium, rubidium, they all will react with oxygen। If lithium can react with water, all of them will react with water। That is how we predict substances। अगर मेरे पास कोई element है, let's say whatever, selenium, if I know the properties of sulfur, the same properties will be reflected with selenium, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सल्फर का, या इवन इफ आई टॉक अबाउट सिलिकॉन, सिलिकॉन क्लोरीन के साथ हमेशा 4 रेशो के साथ कंबाइन होता है, इट फॉर्म्स SiCl4। इट मींस के मेरे पास कार्बन भी Cl4 बन सकता है, जर्मेनियम भी Cl4 बन सकता है। So the importance of group number is they all behave similarly, especially in terms of reactions। Physical properties में changes आते हैं, like this is a gas but iodine solid है, physically they might be different, might be, not always, sometimes even physically they are same, but the way they react is exactly similar, ठीक है। हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस रिएक्टिविटी में आ जाता है। टॉप वाले समटाइम्स दे आर लेस रिएक्टिव, नीचे वाले दे आर रिएक्टिव, व्हिच विल टॉक अबाउट लेटर ऑन। या इस केसेस में फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, आयोडीन इज लेस रिएक्टिव। द वे दे रिएक्ट इज सेम, बट हाउ फास्ट दे रिएक्ट दैट माइट चेंज, ठीक है। तो ग्रुप नंबर, इज दिस पॉइंट क्लियर कि ग्रुप नंबर में यू हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, दे रिएक्ट विद सिमिलर सब्सटेंसेस, ठीक है। कोई क्वेश्चन था किसी का कि नहीं? अच्छा, so periodic table we discussed in detail। They are arranged according to proton number, starting from 1 till vertically they are called groups। They have same number of electrons in valence shell। Horizontal are called period numbers, they represent number of shells। They have similar chemical property, they react with similar। phosphorus की अगर हम बात करते हैं, if it has electronic configuration of 285, so it has how many shells? 3, so it will be in period 3। And if it has outermost shell as 5, so it will be in group 5, ठीक है। वैसे आपके पास जो periodic table given होता है उसमें 13, 14, 15 लिखा हुआ है। You may ignore these for a while, ठीक है। आप इसको ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, 6 इस तरह लिखा करें। 13, 14 फिलहाल छोड़ दें। Anyway, this is pretty basic। Oxygen group 6 and period 2,
कैल्शियम ग्रुप 2 एंड पीरियड 4, ठीक है। अच्छा, सो जून 22 लास्ट ईयर के ये एमसीक्यू है, विल सॉल्व फ्यू एमसीक्यूज। व्हाट डू यू थिंक द आंसर इज? Which statement about two particles have the symbols these two? Which statement about these particles is correct? D, they do not contain the same number of protons. G, it is D is wrong. If I look at electrons, इसके पास कितने electrons हैं? 26 protons हैं, electrons 24 हैं, exactly, because it has a charge of +2. What about cobalt? 27 है, 3 electrons plus 3 charge means 24. जी बिल्कुल A. Isoelectronic है. Is this clear? अच्छा, so we have more questions. June 21. Which particle contains the most electrons? For this, we need to know the proton numbers. मैं बता देता हूँ. This is 16. This is 10, 11, 12. हाँ, ये 19 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसमें तो 10 ही है. This will be 12 और इसके पास 9. Which contain most electrons? So A. This clear? Past paper questions में there should not be any doubt. If you want to or something, just mention कि कुछ clear नहीं है तो बता दें, because these are the most essential part of the lectures. सबसे essential part ये है कि you should be able to solve these MCQs. अच्छा, again we need few I'll tell you the proton numbers. ये 18 है, 20, 11, 19, 26. Calcium is 40. Scandium is scandium कहाँ पे है? It is 21. Which two particles have the same number of electrons? किसके? Sorry, calcium is 20. देखिए A तो definitely नहीं है. सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, पोटेशियम के पास 18. B is wrong. Fe+2 के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? What about Fe+3? 23. C is wrong. Yes, this has 18 electrons. This too has 18 electrons. So D answer है. ठीक है? We'll solve an MCQ or two more. Table shows data for some particles. ये भी आपका question है, November 21. Recent questions हैं. Do expect questions like these. What do you think? इसका आंसर क्या होगा? Anyone? Which two options should I reject first? A and B. देखें, W आपके पास 12 आ रहा है because 23 minus 11. अच्छा. Now what do you think? C आंसर है. अच्छा. Y की वैल्यू क्या होगी? Y is 12, right? Number of proton. Fluoride ion means -1. तो ये 10 electrons हो गए. Go through कर ले. Question है तो बता दें. Simple है. Number of neutron is the difference between 11 and 23. Fluoride ion is always -1. We'll talk about this later on. तो ये 10 electrons हो गए. Because इसके अपने 9 है and Y जो है that is ठीक है. Isotopes हम next class में discuss कर लेंगे. ठीक है.